डिस्क्लेमर, इस वीडियो में कही गई हर बात का प्रूफ वीडियो में ही है। फिर भी अगर आप किसी पार्टी के चमचे हो तो प्लीज वीडियो यहीं छोड़ के चले जाओ। जय भगवान परशुराम जी की। In this video, we will talk about the difficulties India is facing in vaccination process and the cheap mentality of culprits behind this and the conspiracies built by these culprits. Firstly, let's talk about why India is facing shortage of vaccines even after producing 28.33 lakh doses of the COVID-19 vaccines per day. I think you all know the answer. Our population. Actually, population is not the biggest problem because हमारे पास population के 42% लोग under 18 है। इसका साफ साफ मतलब है उनकी कोई बात भी नहीं कर रहा। तो mainly we are focusing on vaccinating the people of age group of 45 plus and we are facing so many problems in that too. As you all know, India is the largest producer of COVID-19 vaccines in the world and we are giving vaccines to 95 countries in whole world. तो क्या हम अपने इस छोटे से एज ग्रुप के लिए इन्हें वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं कर सकते? We can. लेकिन आज भी इस एज ग्रुप के 40% लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। Here I am talking about the first dose only because only 30 million people had the complete 2 doses of COVID vaccine and that's not line shortage because there is a specific time period between 2 doses. So what is the main reason behind this? In January, there is a myth theory circulating on the social media कि वैक्सीन में पोर कंटेंट है या फिर ये हराम है एटसेट्रा। और भी ऐसी बहुत सी थ्योरी जो खासकर उस एज ग्रुप को टारगेट करती थी जिसे हम सबसे पहले वैक्सीनेट करना चाहते थे। Forget about the government records. Let's get on ground reality. 90% aged people in villages सिर्फ इसलिए वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें किसी ने बताया कि उसमें कुछ गलत चीज का इस्तेमाल हुआ है या फिर उनका कोई दूर का रिश्तेदार वैक्सीन लगने के बाद मर गया। Forget it. Let's talk about these myths or rumors spreaders. There is a Twitter user who first tweeted that a poor content is used in vaccine. Remember one thing, this account has 0 followers, 0 following and was created just 3 minutes ago. The tweet, basically a fake account, but this tweet got viral with over 300k plus retweets and 1 million likes. So many, literally so many verified accounts are retweeting this tweet even they don't know the reality behind this. Indian government and Serum Institute take 14 days to give a simple statement to burst this myth. There is a research of Bhaskar, means Dainik Bhaskar in Rajasthan, which says that over 25% of vaccines was wasted in Rajasthan only. There is a district named चूरू और सिर्फ चूरू में 40% डोजेस बर्बाद हो गई। बाकी डिस्ट्रिक्ट का हाल भी पोस्टर का देख लो। उन्हें रिसर्च में 500 वोयल डस्टबिन में मिले जिसमें 250 से ज्यादा डोज थी। सभी वोयल 20 से 75% तक भरे हुए थे। दैट मीन्स या तो डॉक्टर और नर्स लापरवाह थे या फिर लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे ही नहीं। और वोयल खुलने के बाद सिर्फ 2 या 3 लोगों को वैक्सीन लगी और बाकी बर्बाद हो गई। नहीं, ये सच नहीं है। ये वो सच है जो आपको राजस्थान सरकार बताएगी, बट रियलिटी की बात थोड़ी देर में करेंगे। ये आंकड़े सिर्फ 35 सेंटर्स के हैं। जस्ट इमेजिन पूरे राजस्थान में कितने होंगे, पूरे देश में कितने होंगे। झारखंड हैज ओवर 37% वेस्टेज ऑफ कोविड वैक्सीन, छत्तीसगढ़ हैज 30% एंड ओवर 15% इन तमिलनाडु, बट सेंटर हैज ओनली 6% रेट ऑफ वेस्टेज ऑफ वैक्सीन। और बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिनका वेस्टेज रेट 1% से भी कम है। अब सवाल ये है कि जब ये स्टेट वेस्टेज को रोक सकते हैं तो और क्यों नहीं, और सिर्फ नॉन बीजेपी स्टेट्स के ही रेट इतने हाई क्यों हैं? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? लेट्स एक्सपोज दिस। A FIR lodged against Nia Khan who threw 29 vaccine-loaded syringe in dustbin. Nia Khan used to insert the needle inside the recipient's body but did not inject the COVID-19 vaccine. The matter came to light after 29 injections with vaccine doses found in the dustbin. The medical officer in charge of UPHC, Dr. Afreen, has been found guilty of hiding the details of the case, जिससे कि लोगों को वैक्सीन लगे ही ना और लोग वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड पॉजिटिव हों और इंडियन वैक्सीन बदनाम हो। 90,000 of 3 lakh deaths, that means almost 1/3 of deaths in India are in one state. The state which do not have polls, which do not have Kumbh, received one of the biggest supply of vaccines, has some of the richest municipalities and its capital claims to have perfected counter COVID model. I think you all know the name of the state which we are talking about here. यही नहीं, राजस्थान में भी जितने वैक्सीन्स डस्टबिन में मिले थे उन सभी पर बैच नंबर और डेट ऑफ यूज लिखा था।
इसका मतलब वो सेंटर के रिकॉर्ड में वेस्ट नहीं होंगी। ऑल्सो आफ्टर दिस मैटर केम इन लाइमलाइट, राजस्थानी डॉक्टर्स ने बहुत सारी वैक्सीन को दबा दिया, जला दिया। Aren't these vultures anti-nationals who are playing with people's life just because they hate a particular government? Literally 2 million doses of vaccine is sold out by the doctors or nurses in black just for a little money. Punjab government has sold vaccines personally. First they call the COVID is Indian variant, and then the Kumbh Mela pilgrims turned into super spreaders. Really, we all know who are the super spreaders. Congress party blocked beds in friendly hospitals amidst COVID-19 crisis to paint itself as a messiah on social media. Congress toolkit suggests maligning Kumbh Mela while asking its followers to refrain from commenting on Eid gatherings. One more, as millions suffer in pandemic, India's narcissistic prime minister is building a vast folly at a cost that could fund 40 major hospitals. Massive crowd seen at funeral of 84-year-old religious leader Ghazi Fakir, including 2 Congress MLAs. But ironically, CM Gehlot has been tweeting to citizens of Rajasthan to avoid gatherings and follow COVID-related protocols and guidelines. Forget it. Let's get back to the vaccination. They spread rumors about Coronil, about Covaxin, about Covishield, but never said anything about Pfizer vaccine because this will not fit in their agenda. IMA asks Center to take action against Baba Ramdev for his remarks on allopathy, while IMA's own president believes Corona is ending due to Jesus and not because of allopathy. Rajasthan's Congress MLA refuses to take coronavirus vaccine, but later when his wife got COVID, he takes the vaccine. 269 doctors died in second wave only. 97% of them did not take the vaccine just because they were from so-called Congress-friendly hospitals or IMA certified. While Apollo has 0 death because all 3,600 frontline workers got vaccinated. According to a research of India Today, at current rate of COVID-19 vaccination, India may take 3.5 hours to reach herd immunity. But our government is regularly increasing the production of vaccines and said that 12 crore vaccine doses to be available in June. The reason of making this video is just to aware you about vaccines and bust these Maron's conspiracies. अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि ये मेथड ही सही है, कहीं इंग्लिश कहीं हिंदी या पूरा एक लैंग्वेज चाहिए, कोई सी भी। राम राम।